has been organized. This meeting has been organized to inform and guide the students of semester 2 regarding the skill enhancement courses and value added courses that are being offered by the college. I would request the students to listen carefully about all the papers that are being offered. And after that, they should analyze and decide which particular paper they would like to offer so that it can help them further in their higher studies or employability, or it may be of their interest. So without taking much time, I would now request our principal sir to say a few words before we start with the presentations. Thank you, Seemaji. It is a nice initiative on the part of the faculty to make aware or to aware all the students about the kind of options, the type of options that the college is going to provide to the students of first year semester 2 in SEC, skill enhancement courses, value added courses, and of course, generic elective, about which we are going to talk tomorrow at the same time. आप सभी को पता होगा, सभी स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आए थे फर्स्ट ईयर में, कॉलेज ने कुछ ऑप्शंस सेक की और वैक की दी थी और एक ऑप्शन फॉर्म फ्लोट किया था गूगल फॉर्म के फॉर्म में, और काफी सारे बच्चों ने वो ऑप्शन भरी भी थी. और विद इन ए वीक और 2 weeks of time, what happened that most of the students, I would say 50% of the students, wanted to change the option that they had filled in the forms. And we realized later on, when I spoke to so many students, why do they want to change, that at the time of filling that option form, they were not aware that what kind of curriculum, what kind of structure that skill enhancement course would be providing to them, or what would be the aim to choose to select a particular course of SCC or WAC. जैसे अभी सीमा मैम ने आपको बताया कि पर्पस जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज का है वो है आपको एक निश एरिया में एक स्किल प्रोवाइड करना, चाहे वो स्किल आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करेगी और आपके कैरियर बिल्डिंग में हेल्प करेगी व्हेन यू कंप्लीट द कोर्स फॉर आफ्टर 3 years, 4 years, और मे बी यू गो इन हायर रिसर्च. स्किल का मतलब ही ये है कि आप जो करिकुलम में नहीं सीख पा रहे हैं उसमें आपको वो ऑगमेंट करे, उसमें आपको वो हेल्प करे, एक नई स्किल आपको प्रोवाइड हो. और ये जितने भी स्किल कोर्सेज हैं ये इंडस्ट्री और आपके आगे के कैरियर को ध्यान में रखकर और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किए हैं एक कमेटी के. ऐसे ही वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं. जब हम वैल्यू एडेड की कोर्सेज की बात करते हैं तो काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो वैल्यू आपको किसी ना किसी तरह की एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करती है या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देती है. हैप्पीनेस को लेकर है, लाइफ स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, डिजिटल एम्पावरमेंट है. बहुत सारे ऐसे एनसीसी के एक कोर्स है हमारे पास, वैदिक मैथमेटिक्स है. तो आप ये देखेंगे कि सारे की सारे स्किल्स आपको करिकुलम में मिलता है और ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं आपके लिए, जो भी आप जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें भी आपका रुझान हो और जिसमें आप ये सोचते हो कि यस ये स्किल मुझ में नहीं है अभी और मैं ये स्किल एक्वायर करना चाहता हूँ, ये वैल्यूज एक्वायर करना चाहता हूँ. हम सब लोग तो सब कुछ सीख कर नहीं आते. जब हम एजुकेशन के पैटर्न पर चल रहे होते हैं ना, उतने एक्सपीरियंसेस हम लोगों के पास होते हैं. तो हम 12th क्लास किया, जो करिकुलम था उसे पढ़ लिया, उसके बाद कॉलेज में आ गए. तो अब ये जो वैल्यूज हैं जो आपको अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए आप उन्हें समझ सकते हैं. तो इसीलिए आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिजाइन किया गया, रखा गया कि आप जब अपने ऑप्शन फॉर्म भरें गूगल फॉर्म में तो वो बड़े अच्छे से सोच समझकर आप उनका चयन करें, जिससे कि 2 weeks, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, या कई बार तो मेरे पास
आप में से कुछ स्टूडेंट्स आए जो 3 महीने निकल चुके थे, एंड में जाकर उन्हें रियलाइज हुआ नहीं हमें तो ये स्किल नहीं पढ़नी है, तो वो बहुत लेट हो जाता है। और मैंने उनको मना भी किया कि अब ये राइट टाइम नहीं है एटलीस्ट इस सेमेस्टर में स्किल को चेंज करने का। तो क्योंकि उसमें अटेंडेंस का कंपोनेंट भी है, बहुत सारे इवैल्यूएशन के कंपोनेंट हैं। जब तक आप ये इवैल्यूएशन के कांस्टेंट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आपकी होगी एक पर्टिकुलर कोर्स में, वो आपकी जब ही हो पाएगी जब आपने रेगुलरली वो क्लासेस अटेंड की होंगी और शुरू से की होंगी। वो अगर आप नहीं करेंगे तो नेचुरली आप इन पर अपने मार्क्स भी लूज करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी आपको नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपको एक सुविधा कॉलेज दे रहा है कि उससे पहले हम बात करेंगे जो कॉलेज जितने भी ऑप्शंस फ्लोट करने का डिसीजन अभी ले चुका है कॉलेज, कुछ तो नए कोर्सेज हैं स्किल में और कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे शायद पहले हम फ्लोट कर चुके हैं या उसके कंटिन्यूएशन में फ्लोट कि आप उसका एक पेपर पढ़ चुके और अब उसका दूसरा पेपर और पढ़ लेंगे तो वो एक कंप्लीट स्किल आपकी हो जाएगी इन 2 सेमेस्टर। ऐसे ही वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, कुछ तो हो सकता है रिपीट हुए हों कि बच्चा पिछली बार तो एक ही ले सकता था, जो नहीं ले पाया उसके पास अब एक मौका है कि उनमें से फिर दोबारा से वो अपना एक ऑप्शन चयन या एक वैल्यू एडेड कोर्स अपना चयन कर सकता है। तो इस तरीके से कॉलेज ने ये ध्यान रखते हुए कि पहले क्या हम दे चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो बच्चों को दोबारा भी रिपीट किए जा सकते हैं। बच्चे क्योंकि एक ही कोर्स आप चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, तो आपको इस सेमेस्टर में हम एक और ऑप्शन देते हैं कि आप इनमें से फिर दोबारा से लीजिए। जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि हमने एक रूल यूनिवर्सिटी ने कहा है और एम्फेसाइज किया है कि हम कोई भी पेपर कोई भी कोर्स अगर 30 बच्चे नहीं होंगे उसमें तो हम नहीं चलाएंगे। अब क्या होगा, आपने तो फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया होगा तो आप सोचेंगे कि लो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था वो तो हमें मिला नहीं। तो हमने इसलिए नंबर ऑफ जो कोर्सेज हैं 15 या 16 सैक के कोर्सेज हमने फ्लोट किए हैं, तो उनमें से आपको कोई ना कोई एक दूसरा विकल्प आपके पास होगा और वो विकल्प जो होगा सेकंड भी आप दे दीजिए, थर्ड ऑप्शन भी दे दीजिए, तो 3 ऑप्शन कम से कम हम मांगेंगे सैक के लिए भी और वैक के लिए भी। तो जिस पेपर या कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं वो तीनों विकल्प दे दीजिए। अगर हमारे पास पहले विकल्प में ही आपके में 30 स्टूडेंट हो जाते हैं कॉलेज बिल्कुल चलाएगा। अगर किसी कारण से 10 बच्चे हुए 12 हुए तो वो कॉलेज वो पेपर नहीं चलाएगा, तो आपको सेकंड विकल्प दे दिया जाएगा। 2 कोर्सेज जो अभी तक हमारे जब मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट की तो 2 कोर्सेज वैक के नहीं थे उसमें, जिनको अभी ऐड किया गया है। एक तो वैदिक मैथमेटिक्स 2 और एक एनसीसी 2। तो वैदिक मैथमेटिक्स अभी मैं बात करूंगा। अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स नहीं शुरू कर रहे थे लेकिन अब हम सीमा जी उसको ऐड करेंगे क्योंकि जी वैदिक मैथमेटिक्स 1 बच्चे पढ़ चुके हैं। अगर जी उसमें संख्या सही थी और अब संख्या ठीक रहने वाली है तो हम वैदिक मैथमेटिक्स 2 फ्लोट करेंगे इस जी सेमेस्टर में भी। ठीक है, जी 2 जी फ्लोट करेंगे और एनसीसी 2 हम लोग फ्लोट करेंगे उन बच्चों के लिए जो एनसीसी कैडेट्स हैं। और इसमें एक प्रीरिक्विजिट था, पिछली बार गलती हुई कॉलेज के बिहाफ पर कि कुछ बच्चे जो एनसीसी के नहीं थे उन्होंने भी गलती से एनसीसी 1 ले लिया और ये बाद में हमें रियलाइज हुआ कि वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं। अब उन्होंने ले लिया है कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू एडिशन कोर्स जो एनसीसी 2 है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के मेंबर हैं या कैडेट्स हैं। ठीक है, जी उसके अलावा कोई भी बच्चा इसमें ऑप्शन ना दे। इसको हम अपने ऑप्शन फॉर्म में भी नहीं रखने वाले हैं सीमा जी, क्योंकि हमें पता है कि कौन से बच्चे कौन से एनसीसी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं तो उन्हीं को ये पेपर दिया जाएगा। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स 2 एक नया ऑप्शन और ऐड हो जाएगा जो अभी आज ही हमें मिला है उसका सिलेबस, तो उसके लिए हम बात कर लेंगे, या नहीं है तो हम एक ऑप्शन फॉर्म में डाल देंगे। जिन बच्चों ने वैदिक मैथमेटिक्स 1 पढ़ रखा है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस ये हो जाती है। ठीक है इसी तरीके से इसी टाइम पर कल आप जेनरिक इलेक्टिव की भी बात करेंगे हम कि जितने भी जेनरिक इलेक्टिव की ऑप्शन कॉलेज फ्लोट कर रहा है अपने सभी स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए जो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे, उनके पास एक लिस्ट होगी 13 14 14 15 16 16 है इस बार को 16 जेनरिक इलेक्टिव्स की, और यू आर फ्री टू चूज एनी जेनरिक इलेक्टिव अदर देन योर
कोर पेपर्स, कोर सब्जेक्ट। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के हैं, जो ऑनर्स डिपार्टमेंट फ्लोट करेगा वो उसको नहीं ले सकते। पिछली बार कुछ बच्चों ने ये गलती करी और जब वो बच्चे 2 हफ्ते बाद हमें पता चला तो उनको दोबारा से कहा गया। तो उसके बारे में भी इस जनरिक इलेक्टिव में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या स्किल सीखने को मिलेगी, राइट? कैसे वो आपके करिकुलम को या कैसे आपके कैरियर को वो हेल्प करेगी बिल्डिंग में। तो इस तरह की बातें कल जनरिक इलेक्टिव में उन 16 पेपर्स को लेकर होंगी। तो आपको एक सही चॉइस करने का एक मौका, ये प्लेटफॉर्म है। आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर अपने पॉइंट्स लिखें, देखें और उसके बाद में जो है आप ये सोचकर अपना डिसीजन लें कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, क्या स्किल ऐसी है, कई बार तो हमें बहुत अच्छी होती है स्किल, सब कंप्यूटर जानते हैं, लेकिन इजी होने की वजह से और ये सोचकर कि इसमें तो हम नंबर बिना पढ़े ले लेंगे, वो नंबर का ध्यान करके हम उसी पेपर को ले लेते हैं जो पेपर शायद आपको बहुत अच्छे से आता है, वो स्किल आपको बहुत अच्छे से आती है। तो उसका तो देखिए पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होगा या आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करें, चाहे नंबर आपके हो सकता है थोड़ी मेहनत आपको नई स्किल को सीखने में लगे, लेकिन नई स्किल एक्वायर करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। तो ये सभी फैकल्टी ये फील करती है कि हम बच्चों को वो सब प्रोवाइड करें, वो सारे चैलेंजेस को भी दें और उसके साथ साथ उन्हें वो पूरी एजुकेशन कंप्लीट, पूर्ण रूप से जिसे हम कहते हैं, पूरा जिसे कहते हैं, वो एजुकेशन आपको रामलाल आनंद कॉलेज से मिले। और इसलिए हमारा इंटरेस्ट होता है कि जो आप इंट्रोस्पेक्ट करके और आप सोचते हैं कि हाँ ये स्किल नहीं है और ये स्किल मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, उसके लिए ये स्किल जरूरी है, तो आप भूल जाएं, वो आसान नहीं होगी सीखना, क्योंकि आपको वो नए तौर से सीखनी है। तो आप उसका चयन करें, मेहनत करें और अपने आप को एक बेहतर, एक कामयाब व्यक्तित्व बनाएं। तो इसी के साथ मैं सीमा जी आपको मैं देता हूं, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Gupta, for your kind words. And now I would request Sandeep to coordinate with the teachers regarding the PPTs. Thank you, ma'am. So we will be starting our presentation with the first SEC papers, and after completing all SEC papers, we will start the presentation for BSc papers. And at the end of both the presentation, at the end, we will take your questions and answer any doubts that you might have. So we will start now. So ये 1 मिनट जरा संदीप। हाँ सर। सभी स्टूडेंट्स जो भी जिनकी क्वेरीज हैं अपने चैट पर लिख दें, हम उन्हीं क्वेरीज को पढ़कर आपको आंसर करेंगे। इंडिविजुअल किसी के भी डायरेक्ट आंसर लेना मुश्किल होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स का। तो आप चैट पर जो है अपने क्वेश्चंस को लिखते रहें, तो एक एक करके जो है या तो सीमा जी या कोई भी उन क्वेश्चंस के, या मैं भी यहाँ पर हूँ आपके साथ, वो हम एंड में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करते रहेंगे। ठीक रहेगा सीमा जी? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं ये शायद बोलना भूल गई, आई वांटेड टू से दिस कि दे शुड राइट इट इन द चैट बॉक्स। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो इजी रहेगा हम लोगों के लिए भी, और सिमिलर क्वेश्चंस होंगे तो सबको जो है उस चैट से सबको मिल जाएगी जागरूकता। बिल्कुल। Okay, so first we will start with the presentation of skill enhancement courses. First, from Department of Management Studies. Siddharth? Good evening. Okay. Good evening, respected principal sir, faculty members and students. I'm from the Department of BMS, and for the upcoming semester, the department is offering skill enhancement course titled Organization and Team Dynamics. This course is having 2 credits, which means that students will be having total of 3 periods in 1 week. That is 1 lecture and 2 practical. Students, this course has been specifically designed to make you understand the importance of strong team dynamics. And when we work as a cohesive group, we are able to solve our problems faster. This encourages our personal growth. This reduces the stress. This increases the job satisfaction. So all these main things we will be studying in this course. So this is very important skill enhancement course that we are offering. And this time this paper will be taught by Dr. Anubha.
who has recently joined the college, and I extend a warm welcome to her on behalf of the department. I request Mr. Siddharth who will give you more details about the learning objectives and the practical component of this course. Good evening, everyone. So this paper will help the students in understanding the role of team dynamics in the workplace and how it impacts the creativity, productivity, and effectiveness of an organization. As we all know that group work is very important in organizations. So improving team dynamics can lead to better work outcomes, customer satisfaction, and provide competitive edge to the organization. So understanding all these aspects are very important. This paper will also help you in understanding the role of leadership in shaping organizational behavior. The paper is divided into 2 units. Unit 1 is all about company's vision, mission, the policies and procedures involved in an organization for building up an effective team. Unit 2 is about various aspects of team dynamics that affect the productivity of an organization. Practical component is also there, in which students will be given hands-on training for the subject through demonstrations, simulations, and role plays. Thank you. Next, from Department of Commerce, Dr. Ritu. Good evening, respected principal sir, my esteemed colleagues, and dear students. The Department of Commerce, the second semester, is offering the personal financial planning as our skill enhancement course. Personal financial planning, as the name suggests, is a very relevant and interesting subject because all of us must have personal financial planning skills. The course structure of the paper has the total credits are 2 credits. 1 lecture and 1 practical will be held each week. Total marks for the subject are 80, which are divided into end semester theory exam will be of 30 marks. Practical exam will be of 40 marks, in which 20 marks will be for practical, 10 will be for viva, and 10 for continuous assessment. There will be 10 marks for internal assessment also. Who should opt for this paper? This subject is available and of course beneficial for all the students. It's open to all the students of second semester, but commerce and BMS students are advised not to take this paper. The reason being, your discipline specific courses will already cover all the syllabus in this subject. The learning objective of this paper is to familiarize students with personal financial planning skills and to help them know about savings, investment, taxation, insurance, and retirement planning. Also, it will help them in developing skills for effective financial planning. The syllabus of this paper has 5 units. First unit is Introduction to Financial Planning. And as the name suggests, it will tell us what is financial planning, what are the objectives, and how to go about it. It will discuss about savings, investments in detail, and help students to learn about financial discipline. Second unit is Investment Planning, which will discuss various avenues of investment available in India, whether mutual funds, gold bonds, estate planning, portfolio management, everything will be discussed in this unit. Unit 3rd is Personal Tax Planning. And as the name suggests, it will help the students to learn about how to file ITR, how to manage their tax liabilities, how to avail deductions. And of course, this will be also helpful for personal tax planning in the future course of time. Unit 4 is Insurance Planning, which will discuss various insurance options, whether life, property, or health insurance. Everything will be discussed in this unit. Unit 5 is Retirement Benefit Planning, which will be helping the students to know about what are the retirement benefit planning that can be availed by them, what are the options for investments for retirement purposes available in the market, in Indian market. There are various practical exercises also in this paper. You will be taught how to perform electronic fund transfers. Also, it will help you to identify certain Ponzi schemes which have been floating in the market in the recent years. Last but not the least, it will help us in preparing tax planning of an individual. So of course, this is a very beneficial paper and relevant for all individuals, all stakeholders. That's a brief sketch of this paper. Thank you. Thank you, ma'am. Now from the Department of Economics, Dr. Sunenna.
Good evening, everyone. Good evening, respected principal sir, colleagues, and students. The Department of Economics is offering in semester 2 the advanced spreadsheet tool paper. This advanced spreadsheet tool paper is basically based on the advanced learning of the Excel, which most of the students knows in simple terms. The learning objective of this paper are advanced data analysis. You can learn advanced data analysis by studying of this paper, automation skills, and the decision making power by the uses of Excel techniques. And the learning outcomes are making some a meaningful representation of your charts and your presentations, pivot tables, different kind of pivot tables, spreadsheet interpretations, and formatting, layout, proofing. These are the basic learning outcomes of the this paper. Benefits of learning advanced Excel is you are different in the ground of many people, many students who knows the Excel in the simple terms. It provides a good insight into the latest and advanced feature available in Microsoft Excel. It also gives you comfort of using graphics tables and that are utilized to report presentation, sales, and other. And this is the Microsoft tool basically designed for the data analysts, business analysts. These people use this advanced spreadsheet tool techniques for their reports and presentations. Next, please. Next slide, please. And if some of the important benefit which I have listed over here, you will have more value to employers, protects a significant amount of time. What is the meaning of protects a significant amount of time? Because Excel techniques sometimes take more time. So if you are you can make yourself a freelance worker, and you can save your significant amount of time, increase your knowledge and management skill also, because it creates a decision power to you after by creating different kind of pivot tables. You have to interpret them. You are learning here to how to interpret these pivot tables, and none other than you all know about the better salary aspects. This is the most important aspect in today's world. So when you learn advanced Excel technique, you will get better salaries. These are the career options which you can find out in the market by studying this paper: data analyst, matrix and analyst specialist, MIS executives, financial analyst, market research analyst, big data engineers, big data analytics architects, big data solution architects, and more. So in the Excel, there is a more options by like you search for other tools, data analyst tools like SPSS and other things. Excel is wide in itself. If you learn this, you can get better salaries and better jobs. The syllabus of this paper is Excel Advanced Technique. This whole unit is totally dedicated to the Excel Advanced Techniques, which is in the which comes under your spreadsheet. The second unit is Excel Interactive and Automation. This unit is more or less related to the VBA, Visual Basic Analysis. This Visual Basic Analysis is a more advanced form of the Excel. Next, please. Unit third is introduction of VBA. This unit is completely designed to understand the VBA and the making graphs, charts in the VBA, worksheets in the VBA, macros in the VBA. So this is really helpful for your career option, data analysis and decision making. This is basically depend on the your financial planning. Class teaching and examination scheme is class teaching. It has a 2-credit course, and both credits are assigned for the practical purpose. 2 practical means 4 hours lab practice. So we will practice in the computer lab for this. There is no theory lecture, and the examination scheme is total marks is 80, and bifurcation of total marks is continuous assessment 20 marks, practical exam 40 marks, and viva is 20 marks. Thank you.
Thank you, ma'am. From Department of Environmental Studies, Dr. Swagta. Hello. Yes, ma'am. Hello. Okay, I'm audible, right? Yes. Okay. So good evening to principal sir and my colleagues and my students. So I welcome you all. So first of all, Department of Environmental Studies offer the SEX skill enhancement courses is your environmental auditing. The environmental auditing it is based on the 2 credits of one is two is for the practical. So environment audit is basically a type of evaluation intended to identify the environmental compliance and management system implementation gap along with the related corrective actions. In this way, they perform an similar function to financial auditing. The course objectives are knowledge of the essential concept and elements involved in the environmental auditing, get instruction on how to conduct an environmental audit of any company or institution, and promote the critical thinking about environmental issues and create regional solution to mitigate them. So these are the few practicals of this sec. And the teaching and learning interface for this practical skill is about first is laboratory practicals, second is your fieldwork exercise, third is customized exercise based on available data, survey analysis, developing case studies, demonstration and critical analysis, and experimental learning individually and collectively. So learning outcomes are acquire the abilities required to carry out an environmental audit in a precise manner, create a sense of ownership and accountability for addressing the local environmental issues, grow an interest in studying environmental audit in depth and as a potential career. So the prospective sectors are universities, colleges, environmental consultancies, environmental NGOs, or Indian audit and revenue departments, and other departments also. Thank you, ma'am. Now from Department of Geology, Dr. Ravish Lal. All right, Sandeep, thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. First of all, good evening to all. So myself, Dr. Ravish Lal from Department of Geology. So this time we are offering an skill enhancement course on environmental impact and risk assessment. So you can see the first slide, which is basically giving you an idea about what exactly environment is. So you all know that what is environment. So whatever surroundings we are having in our place, because all of you have come from various parts of the country, from small villages, towns, and cities. So you might have noticed that how your surrounding is changing. So the term environment basically encompasses the non-living components such as air, water, land, and the living components such as plant, animals, and ultimately their relationship with each other. So in this course, we are going to learn about what are the major different types of environment and what are their aspects, and how the environmental impact assessment, which is basically a tool to assess the significant impact of the projects, various government projects and private projects such as dams or major hydropower projects, mining sector. So these are some development projects, how they have impacted the environment. So ultimately this environmental impact assessment leads to the decision making process through the policy makers. So ultimately it affects on the environment at the earliest possible time, and it aims to avoid or reduce the effects, and this ensures that the proposal are understood properly before the decision are made prior to any kind of environmental project. So this is an next slide, please. So here I'm going to just discuss about that what are the credit distribution, eligibility, and the requirement. So this entire course is of 2 credits where you have only the practical exercises. 1 credit is of 2 credits, where you have only the practical exercises, and 1 credit is of 3 credits, where you have only the theory. So this entire course is of 2 credits where you have only the practical exercises, and 1 credit is of 3 credits, where you have only the theory. So
You won't be having theory, and the main eligibility criteria is that you need to have science as your main course. Next slide, please. Yes. So here you can see that these are the major objectives of this course. So in this course, we're going to gain insight into the concepts of environmental impact assessment and its relevance for sustainable development. Secondly, you are going to acquire the knowledge of the socio-ecological and economic perspective of any development project. Third, you are going to evaluate the methodologies to conduct and analyze environmental impact assessment acceptable per prevalent regulations. So here are some of the learning outcomes. So your learning outcomes basically includes that how you're going to conduct the EIA studies of any development project and analyze its environmental impact, and what are the implications of it in the surrounding environment. You can serve as a consultant to different NGOs, government agencies, and private companies, and you can have or help them to analyze a development plan. Thirdly, you can evolve strategies to ensure the development and conservation. Fourth, you can help to formulate the sustainable development strategies for any development plan varying in scale. So it can have a small scale project, it can have a large scale project. So as you can see in the images that how the various types of human activities can lead to have a severe impact on the environment. You can see that deforestation can lead to the change of landscape, and the mining sector or the hydropower projects can lead to the severe impact on the environment. So the main role as an environmental impact assessment would be to analyze all these changes. Ultimately, you are going to identify and classify different development projects based on their scale and the impact on the environment. Next slide, please. So here is a broad course structure. So since it is a practical based course, so first we will be having the laboratory practicals based on theories, and we are going to have fieldwork exercises where you will be visiting some of the local sites where we have some developmental projects going on. You will be going to carry out the survey analysis and doing the data collection of various aspects of EIA. And ultimately, we are going to have exercises based on the available data sets which are available on various online websites. Next slide, please. So these are an overview that how these practical exercises will be conducted. So as I have already discussed, what will be the part of your main learning outcomes. On the basis of that, we will be having various types of practical exercises related to the developmental projects. So prepare questionnaires and compilation of primary data to study and scope of the project based on the public participation. Identify the impact due to the mining projects using some checklist methods, and prepare an environmental management plan for a mining project. So these are some of the overview of your practical exercises. Next slide, please. All right. So these are some of the reference books which are given in your syllabus, so which we are going to follow for doing some theoretical as well as some practical exercises when you're going to opt for this subject. Next slide, please. And ultimately, this is how you are going to be evaluated. So since it is a practical based subject, so you will be giving practical exercises, some seminars, some assignments, and ultimately your assessment will be based on all these parameters. Next slide, please. Thank you. Thank you, sir. Now from Department of History. Good evening to Principal Sir and all faculty members and students. The Department of History is offering Reading the Archives as SEC paper. Next slide. This paper is basically based on the archival studies, how we use archive as a source of history and how the primary materials are preserved in the archive are the main focus of this syllabus. So this syllabus also designed for the students who are going to make their career in the higher study, especially with history, political science, Hindi, and other social science and arts faculty subjects. So this subject is for the student who want to pursue their higher studies
in history and political science and other subjects can pursue this paper. Next slide. As we can see here, the definition of archive, basically, I have put this definition because many students are facing this subject first time, archive. So these are the some basic definition as defined by International Council of Archive, and different facets of this syllabus is written, photographic, audiovisual, and digital analog form. And the student who are going to pursue this course, those seek to develop skill and method of historical research through the critical evaluation of primary sources. And the first unit of the course will emphasize that the historical archive cannot be treated as mere information, and that issue of authorship, representation, and access are crucial to any understanding of the primary sources. At the core of the course are three carefully designed basic research projects that will introduce the student to a wide variety of primary sources that ranges from the colonial ethnographic and legal text to visual photographic archives. The student will focus on the kind of archive in each project along with an important text that will illuminate the reading of skill of this kind of archive by historian. The course structure is divided in two units, where first unit is about introduction of the syllabus and several themes as designed by the department, and the second unit is based on project that will assign to all students, and here is the practical components, and the credit course is one lecture and one tutorial. Next slide, please. This is examination scheme which conclude CA and other assignment, class test, projects, field work, presentation, and other activities that will be the main base of the your assignments. Next, please. As I have Are you there? Seems there is some network issue. Okay, so we'll keep on. So from Department of Mathematics, Dr. Bashan Mishra. Hello, am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Basant, you are audible. Okay, thank you. Good evening, everyone. This is Basant Mishra from Department of Mathematics. We are offering logical reasoning as a skill enhancement course for semester 2. And particularly, the course is so designed to make each and every individual of semester 2 to be so competitive, so that they can face the competitive examinations properly, as well as it will help you in your deductive reasoning skills that will help you in your research, where some hypothesis is being developed and you will have to reach to your conclusion. So whether you are from science stream, art stream, or commerce stream, you will have to face the competitive papers, where you will find the logical reasoning questions in each and every examinations, as well as once you will go to the higher studies, there you will have to tackle this logical reasoning ability to face or solve your research problems. So far, the post curriculum is uh, concerned, it is of two credit based, one lecture and one practice.
So as I said that the logical reasoning basically is divided into three sections: inductive reasoning, deductive reasoning, and experimental method. Inductive reasoning is some sort of that you face in competitive papers as a verbal reasoning, where contrapositive, contradiction, inverse statements. So these type of problem we will discuss in this. And deductive reasoning is a kind of problem where during research you set some questionnaire, or you just formulate a hypothesis, and to accept or reject that hypothesis based on the available data, you just reach to your conclusion. So through this skill enhancement course, we will develop your skill to face competitive papers, as well as it will help you in your research, whether it is of science stream, commerce stream, or humanities. Uh, Next slide, Sandeep. So for learning skill is concerned, particularly the course is designed to provide a grasp of applications of different types of broad logical reasoning skills. Of students reasoning in both deductive and experimental setups. Skilling students in problem solving ability. This is the one of the important skill that will be developed through this course. So far learning outcomes is concerned, after studying this course, you will be able to explain the difference between deduction and induction method of reasoning. After this course, you will be able to apply the experimental method, how we can analyze the data which we have, and on that basis, how to reach the conclusion. Uh, After this, you will be able to demonstrate the mental aptitude necessary to arrive at their conclusion from the available data points. You will be able to attempt a competitive questions, set up hypotheses, and reach to a conclusion with proper experimental method. So far, scope of logical reasoning is concerned, as I said, that most of the competitive papers like CAT, GATE, banking sector, railway, you just named, you will find the question from logical reasoning. Through this course, you will be able to solve in a few seconds particularly. So we will develop that thing. Deductive reasoning, as I said, that this is the research analysis one, where you will have to formulate a hypothesis, and on the basis of the data observation or collection, you need to draw conclusion. It will improve your critical thinking and logical ability. Like few science students, or during your school days, you have learned about the truth table, that is possibility or tautology. So these kind of things we will discuss. Uh, the experimental methods involve manipulating one variable to determine if the causes, or if this cause changes in another variable. So, I mean, while discussing any research problem, we are just trying to find out whether this particular thing is affecting the result or not. So this this statement is to be accepted or rejected. So logical reasoning will play a vital role in that, based on the data available to you. So whatever stream, as I said, you will require this. So for syllabus is concerned, it has 2 units. The first one is basically that the competitive papers one, the square of opposition, converse, observe, contrapositions. So we'll discuss these things. In unit 2, we will discuss the experimental method in logical reasoning. These are very important, and sometimes what happens when you will pursue your MPhil or higher studies, you will have to go through these things during research methodology things. So this will help you to get the concept of logical reasoning before you reach that level. So it will certainly develop your skill. One recommended book is there,
But what we have planned with our principal sir and other conveners, that in this course we will invite few of the eminent personalities and a few more competitive examination preparing institutes we have. So we will invite some people from there so that they can take few classes or few interaction with you people, so that you people can easily understand what type of question will come in the competitive papers and what type of logical reasoning will help you in research problem. So this is the part of teaching methodology we will discuss. When you will be in the class. So far, assessment is concerned, internal assessment is 25%, examination is 50%, and practical aspect is 25%. So this is similar kind of Vedic mathematics thing. But through this course, I'm damn sure that we will able to develop your skill and it will help you in your future. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now from Department of Political Science, Dr. Sunil. Am I audible, Sandeep sir? Yes, sir. Okay. Good evening to respected principal sir and my colleagues and dear students. I'm Dr. Sunil Kumar from the Department of Political Science, and the Department of Political Science is offering SAC Skill Enhancement course. The title of the paper is Life Skill Education. So before going into the scope and limitation of this paper, let me tell you the meaning of life skill education. So the development of a student can be made possible by keeping, all aspects of their personality in mind. So this is the reason why life skill education is important and plays important part in everyone's life. So in life skill education, the overall personality of student is taken into consideration, and it gives strength to handle any kind of situation and gives the courage to face struggle to achieve any target. So basically, this is the real meaning of the paper. And so far as syllabus is concerned, the entire paper is divided into 4 units, and each unit, carries sub themes. And if you look at the second slide, Sandeep ji, yeah, okay. It also, contains certain objectives and outcomes. So the first to impart life skills for career building, critical thinking, and attitudinal based leadership, and to learn the application of life skill in diverse field work settings, and also focus on development of values in strengthening knowledge and life skills, and bringing high quality, standard in the field work and practice learning, and also understand the strength-based life skill development and teamwork, innovate leadership, design thinking, and career building skills, and development, universal human values while utilizing life skills in the field work. And next unit, Sandeep. That is all. Yes. So now question is why it should be chosen by the students. So in today's time, we all know that post globalization era, because of the entire society is market oriented. So because of this, because of this capital oriented attitude, and today's generation, is forget the moral values and ethical norms. So this paper also teaches us several kind of moral values. So when I say that life skills are abilities for adaptive and positive behavior, and that enables students to deal effectively with demands and challenges for everyday life. For example, self-awareness, stress management, emotional regulation, and positive thinking and self-esteem. And second, the interpersonal skills, that is empathy, listening skill, interpersonal effectiveness, handling disputes, managing relationships, and confident
communication. And the last, the thinking skill, like goal setting, decision making, problem solving, critical and creative thinking, and executive function excellence, and resilience. So we can say, when I say self-awareness, that means knowing and living with oneself. And when I say interpersonal skills, that means it is knowing and living with others. And when I say thinking skills, that means basically making an effective, decision. So the overall, this paper, this paper teaches all, kinds of values and, life skills. Thank you, Sandeep ji. Okay, so the next is from Department of English. Good evening, everyone. I am Ashwarya Singh, and I'll be teaching the SEC Communication in Everyday Life, offered by the Department of English. So before I begin, let me quickly delve into the credit distribution, eligibility, and prerequisites of the course. So this course has 2 credits. There is no lecture or tutorial component to this course. There's only a practical component to this course. And the eligibility criteria, it is available to everyone. So let me begin with the learning objectives. Firstly, let me introduce the course to you. As the name suggests, this course is designed to give you the skills to communicate effectively in your daily life. Human beings are social animals, which means that we are constantly interacting with each other. It is important then that we are able to communicate what we mean in a clear, precise, and conducive way. Good communication skills benefit us not merely in our professional life, but also in a personal life. Okay, looking at the learning objectives, to provide students with the fundamental skills needed to communicate effectively in daily life, to introduce them to the basics of communication, to refine and improve their already existent listening, speaking, and writing skills, and to develop practical skills that will help them navigate everyday life. Now, moving on to the next slide. Learning outcomes. What we hope the students will have learned from this course. This course will hopefully help students become effective mediators and enable them to handle conflict situations with finesse and consideration. Studying this course will help students improve their interpersonal relationships, as successful communication is the bedrock of any healthy relationship, whether it be a professional relationship or a personal one. Studying this course will help inculcate fundamental reading, writing, and speaking skills that will prove indispensable to students in their academic and professional lives. And finally, studying this course will help students develop critical and independent thinking, which is very important today, and allow them to pass the many messages that they receive on a day-to-day basis and all the information that they have access to today. Looking at the syllabus, so the syllabus is comprised of 5 units. Unit 1 deals with theory of communication, looking at the theoretical framework of communication, meaning, features, uses, cycles, feedback, advantages, the barriers to communication, and finally the 7 C's of communication. Unit 2 has to do with listening skills, basically improving the oral comprehension of the students. Netiquette, which has to do with how students conduct themselves on the internet. Audiobook listening and discussions, basically they'll be given a text to listen to and we'll have a discussion on it afterwards, and note taking on the basis of what they've listened to, whether it's a lecture or a speech. Unit 3 is speaking skills. So oral presentation, students will be taught how to give a presentation like this one that I'm giving today with the help of audio visual aids. They'll learn how to deal with the audience and the feedback that they get from the audience. They'll be taught how to deliver a presentation effectively and how to handle the questions that come afterwards. Group discussion, of course, group discussions. Students will be asked to discuss contemporaneous issues relating to society and learn how to think critically about these issues and articulate their respective viewpoints in a considerate fashion. And the next is public speaking. They'll be taught how to give a speech in public. An interview, students will be taught how to relay information about themselves in the most effective, attractive, and concise manner. So not just
formal interviews, but also personal interviews. Finally, Unit 4 is reading skills. They'll be taught how to read in different ways, whether it's intensive reading or extensive reading or scanning or skimming. And finally, we move on to Unit 5, which is writing skills. The students will be taught how to summarize, how to delineate the key points of a text in their own words. They'll be taught how to paraphrase, how to present existent information in their own words. They'll be taught how to make notes, how to compose different kinds of essays. They'll be taught both formal letter and an informal letter. They'll be taught how to write different kinds of reports, whether it's a news report or an organizational report. And they'll be taught textual analysis, which is very important and which will help them in their other courses as well, where students will be taught to look beyond the surface of the text and access its immanent meaning by examining the different components of a text. And finally, we have intra and interpersonal skills, where students will learn how to write a monologue or a dialogue, and in the process learn how to develop and deal with different perspectives and hone their conversational skills. So I'll just talk about assessment quickly. So this paper is 80 marks total. The end semester practical written exam is for 40 marks. Viva is for 20 marks, and continuous assessment is for 20 marks, total 80 marks. And continuous assessment will include tests, written exercises, and oral exercises. Okay, thank you. Next, Dr. Taha. Am I audible? Yes, sir. Good evening. मैं ताहा यासीन हूँ अंग्रेजी विभाग से. The second option that of skill enhancement course that the English department is offering is creative writing. Creative writing की जब भी बात होती है, there is a question that क्या जो trait है creatively लिखने का, जो characteristic है, जो ability है, क्या हम वो लेके जन्म लेते हैं या creative writing हम सीख सकते हैं as a talent acquisition. एक नुआंस डिटेल डिस्कशन के बाद हम क्लास में ये कंक्लूड करेंगे कि कोई भी हाई बॉर्न नहीं है, बल्कि हम सब क्रिएटिव हैं. जो जरूरी है वो है एक नेसेसरी एम्बियंस, एक एनवायरनमेंट का, जहां हमारा क्रिएटिविटी अपना जो है एक मैच्योरिटी पा सके. और हमारा ये प्रयास रहता है कि कक्षा में हम उस एम्बियंस को, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएं. और क्रिएटिव राइटिंग बेशक एक आर्ट है, लेकिन हम उसको अपना क्राफ्ट बना सके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जो दूसरा क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग को लेके होता है वो ये है कि क्या क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ इमेजिनेशन है? क्या ये एक सच्चाई, रियलिटी से दूर एक अलग दुनिया है? सिगमंड फ्रॉयड इस बात को कॉम्प्लिकेट करता है, प्रॉब्लमेटाइज करता है, ये कहते हुए कि जो हमारा इमेजिनेशन है वो भी हमारे सच्चाई से, हमारे रियलिटी से, हमारे एवरीडे कोटिडियन रियलिटी से मीडिएट होकर के बनता है. तो ये बेशक इमेजिनेशन कोई अलग दुनिया नहीं है, ये हमारा एवरीडे लाइफ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो हाउ रियल इज रियलिटी या हाउ इमेजिनरी इज इमेजिनेशन? कोई डिवाइडिंग लाइन है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में? मैं अक्सर क्लास में एक एग्जाम्पल देता हूं कि गुरुग्राम के एक पॉश सोसाइटी में बैठा एक छोटा सा बच्चा जब फेरी टेल पढ़ रहा होता है और वो एक चित्र देखता है एक स्नेक का, और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक डर, एक मिक्स्ड इमोशन जनरेट होता है. उसी उम्र का कोई बच्चा किसी फॉरेस्ट बॉर्डरिंग विलेज में एक सांप को गले में लपेट के घूम रहा होता है. तो जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच, जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच का जो डिफरेंस है, वो संदर्भ का डिफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है. एक का रियलिटी दूसरे का इमेजिनेशन हो सकता है, एक का फैंटेसी दूसरे का रियलिटी हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो क्रिएटिव राइटिंग में इन तमाम बातों के बाद हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि क्रिएटिवली लिखना हम सबके लिए पॉसिबल है. फिर हम थोड़ा टेक्निकलिटीज में जाते हैं कि कितने तरह की क्रिएटिव राइटिंग पॉसिबल है, कितने वैरायटी के क्रिएटिव राइटिंग होते हैं. पोएट्री, प्लेज, मूवी, फिक्शन, सॉन्ग, स्पीचेस, मेमोयर्स, पर्सनल एसेज, रिव्यूज. दूसरी बात, क्या क्रिएटिव राइटिंग को फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिवाइड किया जा सकता है? क्या महज फिक्शन क्रिएटिव राइटिंग होता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएटिवली नहीं लिखा जा सकता? क्या साइंस की किताबें क्रिएटिव नहीं हो सकती?
तो इन तमाम डिस्कशन को हम क्लास में एनस्यू करेंगे। और ये कंक्लूड होता है कि क्रिएटिव राइटिंग का कोई डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, कोई डिमार्केशन पॉसिबल नहीं है। क्रिएटिविटी हमारे हर एक जीवन के हर एक लम्हे में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन जब टेक्निकली हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो टेक्निक्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, लैंग्वेज के डिटेल्स, लैंग्वेज के नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इमेजरी क्रिएशन, कितना बेहतर तरीके से मेटाफर्स, सिमिलीज सबका इस्तेमाल करके हम चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन तमाम बातों पे डिस्कशन होगी क्लास में। एक टॉपिक जो ऐड किया गया है वो ये है कि क्या मीडिया में लिखा जाना भी क्रिएटिव कहला सकता है। मीडिया अब प्रिंट और ब्रॉडकास्ट तक लिमिटेड नहीं है, एक बहुत बड़ी दुनिया खुल गई है सोशल मीडिया के साथ। और अगर हम क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और क्रिएटिव लिखना सीख जाते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपॉर्चुनिटी ओपन होता है हर वक्त, जो हमारे ग्रिप में होता है, सिर्फ हम तक सिर्फ हमारे द्वारा होता है, वो सोशल मीडिया की एक पूरी पूरी दुनिया है। अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें इस कोर्स का, तो कुछ भी लिख पाने से लेके सदी का सबसे बड़ा लेखक हो जाने तक का जो सफर है, उसका पहला कदम है कि हम क्रिएटिव राइटिंग का बेसिक्स जाने और लिख पाएंगे, उसके लिए सफिशिएंट कॉन्फिडेंस जो है वो हम अक्वायर कर सकें। ठीक है, और वो जो बेसिक्स है, जो इनिशिएशन है, कभी कभी जीवन में जो है एक अच्छा अंतराल गुजर जाता है और हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी थी, और उसी कैपेबिलिटी को जानने के लिए हम क्लास में वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम एक शब्द से शुरू होकर के और जो है पूरी की पूरी कविता लिख पाए, पूरा का पूरा कहानी लिख पाए। ये कोर्स 2 क्रेडिट का है, दोनों प्रैक्टिकल है, तो आपको वीक में 4 घंटे का प्रैक्टिकल होगा और टोटल 80 मार्क्स का ये कोर्स है, जिसका कंटिन्यूअस असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। और ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस असेसमेंट के बाद का जो 60 मार्क्स है वो एक डिसाइडेड डेजिग्नेटेड डेट पर हो जाता है, 40 नंबर का रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम और 20 नंबर का वाइवा वोस। अगर आप वो उस डेट को अगर किसी तरह से भी मिस करते हैं तो आप 80 में से 60 मार्क्स चला जाता है, आपको दोबारा अपीयर करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट you don't miss the dates, you don't miss any of the tests and assignments for that matter. और सबसे important बात कि स्किल इन्हांसमेंट में भाषा बैरियर नहीं हो सकता है। जिस तरह इस प्रेजेंटेशन में भाषा बैरियर नहीं है, उसी तरह लेक्चर्स में भी बैरियर नहीं है, और उसी तरह क्रिएटिव लिखने, क्रिएटिव सोचने, क्रिएटिव बोलने में भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए। तो हम हर तमाम भाषी लोगों से हम स्वागत करते हैं। अगर मैं सिलेबस बता करके बोरिंग नहीं बनाना चाहता था इसको, आप सिलेबस देखें, सिलेबस जितनी बातें हमने की उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और आपका स्वागत, धन्यवाद। Thank you, sir. From next, we have Department of Statistics. Department of Statistics I'm Professor Seema Gupta, and I will be presenting on behalf of the Department of Statistics for the paper Statistical Software Package. As such, department will be floating 2 SEC papers. So this is one of the papers. हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेटा से रिलेटेड है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं ये उससे रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना, उसको एनालाइज करना, जिससे कि आप उससे अल्टीमेटली कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स जैसे हम देखते हैं बीएमएस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये खास तौर पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे इस तरह की चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। एनालाइज करने के लिए बहुत से तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। आप लोग एक्सेल के बारे में सुन ही चुके हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज की, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होने से हमें क्या फायदा मिलता है? हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन
you are able to get the required information if once you input your data. So SPSS एक software है, statistical software है, which will be taught under this paper. And SPSS basically stands for Statistical Package for Social Sciences. So और इसको पढ़ने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप सभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर टू familiarize students with data analysis using a statistical software package SPSS, to provide skills for research and increase employability, to lay a foundation for advanced data analysis work in higher education. आप सभी जो लोग आगे रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह के पेपर्स पढ़ते हैं, आपको डेटा एनालिसिस के लिए डेटा एनालाइज करना मतलब वहाँ यू डू गेट एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस. बहुत सारे लोग जो पीएचडी करने वाले हैं आगे या एमफिल करने वाले हैं, उनको अपने काम में आगे अल्टीमेटली डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है. सो such a software application software will come very handy for you. I'll come to learning outcomes. The learning outcomes for this paper are to understand, once you study this course, the students will be able to understand the basic functions of statistical software package for managing variables, to generate descriptive statistics, to describe the data and analyze data through graphs and charts, to test the differences in sample means, to identify a relationship between variables and develop models for predicting dependent variable on the basis of independent variables. Sandeep, next slide. Basically, as I said in the beginning, this package is very helpful because you get the information और जो भी आप data का analysis perform करना चाहते हैं, जो भी analysis आप perform करना चाहते हैं, you can get it at the click of a button very easily. It's a completely menu-driven software. SPSS is a comprehensive and flexible statistical analysis and data management solution. It is an application software used for compilation and analysis of survey data, data mining, data analytics, and statistical analysis. When is it, what it is basically used for is कि जब आप सभी ने जरूर स्कूल लेवल पे थोड़े बहुत मैथमेटिक्स पढ़ते हुए जरूर पढ़ी होंगी कुछ टर्म्स, मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम, मिनिमम. सो इस तरह की ये सभी चीजें जो आप कंप्यूट करना चाहते हैं बहुत इजीली, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट हेल्प्स यू इन कंप्यूटिंग दीज डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. It helps you in representing, for the visualization of the data. There are a number of different kinds of graphical tools that are available. Then to examine the relationship between the variables by computing correlation, regression, etc., and to compare the groups. It allows you to perform various tests like t-tests, etc., at very easily. This software comes in very handy for your higher education, for market research, healthcare, banking, finance, insurance, etc., etc. You can read it from the screen. I don't need to read it out. Next screen, Sandeep. In fact, instead of reading out this, I would very briefly tell you that the paper, basically, it is of 2 credits, all involving only the practical hands-on work. So there will be 4 practical classes. You will be working on computers for running this SPSS, and how you will be assessed. There will be 25% of marks assigned for internal assessment, 25% of marks for, wait a minute. Just a sec. 25% for internal assessment, and then 50% for the end semester exam. So I'll just finish my slide with this, and I'll ask Anurag to present the next paper. Good evening, respected principal sir, my colleagues and dear students. So I'm Anurag Sharma, and I'm going to give a brief presentation on the SEC paper that we are offering, IIT Skills and Data Analysis 1. So, sir, next slide, please. So, as we know that whenever we go into data analysis, the first and foremost step in the data analysis is to enter the data efficiently.
no matter what software we are using, if we are not entering the data efficiently and correctly, then we will not get good and efficient results. And for that, we need to learn the IT skills, and it is very important to learn the IT skills. So this course will enable you to enter the data efficiently to make the analysis that you will be doing easy on any software that you'll use. And these will be done by making you understand the real life data. And apart from learning how to enter the data efficiently, we'll also learn to understand the basic measures of central tendency. So what do we mean by basic measures of central tendency? Is that we have different kinds of data sets and different types of data variables. So which measure of central tendency will be used when, and when we should use mean, when we should use median, when we should use mode, when standard deviation should be used as a measure of dispersion, when range should be used as a measure of dispersion. These all queries and these all things will be covered in this course, and also the students will be provided. Sorry, sir. Back a slide, please. So the students will also be given a hands-on experience on provide of conducting the basic statistical analysis through the spreadsheet. Also, we'll also learn how to prepare a questionnaire to collect the primary data. So next slide, please. So this course is divided into 2 units. The first unit covers the introduction of fundamental of data sets. Again, what are the different types of data sets, and what are the variables that we generally encounter while dealing with the data, what measure of central tendency should be used to report that data. And again, there are two ways to collect the data. There is primary data collection and there is secondary data collection. So we learn how to prepare a questionnaire to collect the primary data so that we can efficiently enter it into Excel, and that can be used for further analysis. And the one and important most thing is that we might not get different software in different uh, sections, but we will eventually get Excel everywhere. So it's very important that to learn the measure of central tendency and basic graphs that are covered in a spreadsheet. Next slide, sir, please. And the second unit covers the familiarizing the student with summary statistics, examples, and identifying the situations on appropriate use of measure of central tendency. And then the concept of normal distribution will also be discussed, as it's a very important distribution to use in real life data. Next slide. And after studying this course, you will be perform basic statistical analysis. You will be able to construct questionnaires, and you will be able to report the data without the use of any specific software. So this will enable us to analyze the data irrespective of the situation you are in. So that's all from my side. Thank you. Now from the Department of Computer Science. Sandeep, let us request every little bit more precise and short, because if we are going to cover back courses also today, it is going to take a very long time. So we would request our friends. No, I don't think, Simaji, it is possible now, because as you are seeing, the students now will be very anxious and tired. So that's what I felt. We may do it tomorrow at 7 along with G. And in G, please not more than 2 minutes or 3 minutes of time. Right? Just guess what they are going to get.
Okay, sir. ठीक है। So from Department of Computer Science, this will be the last SEC paper, and then we will discuss all your questions and all your queries. Good evening, everyone. So the first course offered by Department of Computer Science is Backend Web Development. So this course will focus on what tasks are needed to be performed for website development on the server end. So next slide, please, Sandeep sir. So ये 2 credit का course है हमारा. इसमें हमारे दोनों credit practicals के हैं. So total में 4 hours of practicals. इसका कोई हमारे पास prerequisite नहीं है. Anybody can join this course. इस कोर्स में बेसिकली वी विल सी व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स आर अप्लाइड फॉर बेसिक सर्वर साइड वेब प्रोग्रामिंग. इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फ्रंट एंड के वक्त हमने पिछले सेमेस्टर जो कोर्स किया था उसमें हम देख रहे थे हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी लगती है. सो बैक एंड में हम क्या देखेंगे कि सर्वर साइड पे क्या हो रहा है वहां पे. तो जो हम यूज करेंगे उस टूल का नाम है Django, एंड वी विल सी हाउ टू क्रिएट, मैनेज, अपडेट एंड अपडेट डेटा ऑन दी सर्वर एंड. तो जिन लोगों ने फ्रंट एंड करा है पिछले सेमेस्टर में, अगर वो इस टाइम इसको बैक एंड का कोर्स ले लेते हैं तो एक उनका पूरा फुल स्टैक का मॉड्यूल बन जाएगा एंड यू कैन बी वेरी वेल इक्विप्ड विद वेबसाइट डेवलपमेंट. तो इसको आप कहीं पे भी अपने जॉब में भी आगे यूज कर सकते हैं. एंड जिन्होंने नहीं लिया था पिछली बार फ्रंट एंड, वो अभी बैक एंड लें और अगली बार यू कैन टेक फ्रंट एंड. सो दैट विल ऑल्सो बी another way to complete the entire course module. So next slide, please, sir. So this is the syllabus. You can see all these topics will be covered. So we are using Django framework, which will be used for backend web development. So further will be next topic will be continued by Sakshi. Good evening, respected principal sir, all the faculty members and dear students. I am Sakshi from Department of Computer Science. I will be teaching the SAC course, Document Preparation and Presentation Software. Basically, in this digital era, अगर हम बात करें after COVID-19, every field has to come in online mode, right? And this tradition has been followed up by education system and professional sectors. So students, this SAC, as the name represents, will help you to work and convey your ideas and assignments in a good and effective way. जल्दी कर दिया काम, 1 मिनट के अंदर बढ़िया था, लेकिन ठीक था. जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी. In a good and effective way. And we will use a tool, we will work on various tools for conveying communicating one's ideas, views and observation. This course is basically designed इसलिए किया है, क्या हम text documents को कैसे बना सकते हैं by using well formulated mathematical equations and algorithms. हम यूज करेंगे Zotero, LibreOffice and PPTs पे कैसे काम करें, आप कैसे एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करें, बिकॉज इन दिस डिजिटल वर्ल्ड हम सिर्फ प्रेजेंटेशंस पर काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं, एंड आप कैसे इफेक्टिव मैनर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंटेशंस. वी विल लर्न how to convey our ideas using multimedia tools such as videos, audios, images in a PowerPoint presentation, right? And this is the syllabus that will cover. यहाँ पे sir, please back 1 second, I will take. We will learn how to style the pages, formatting of content will be there, table and figures पे हम काम करेंगे, referencing, indexing and how to make presentation. This course will be of 2 practical credit and आपके 4 lectures रहेंगे in a week. After that आपका 80 marks का evaluation रहेगा, 25 for your internal assessment, 25 for your CA and 50% for your practical assessment. Right. Next sec is please Shikha ma'am, continue. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. The next SEC paper that will be floated by the Department of Computer Science is Analytics or Computing with Python. Next slide, please. So Python, as you all know, एक सबसे important और एक ऐसी language है आपकी जो major fields machine learning, game designing, 3D graphics, web development, data science में बहुत use होती है. And
top profiles which the industry offers in this language, Python, is you can go in software engineer, you can opt for data scientist post, even research analyst and Python development में Python as a language का बहुत scope है. Next slide. The credit distribution is same for the SEC paper. So you have 2 credits and 4 practical classes for Python. And ये course की कोई basic eligibility as in you do not need to have previous Python programming language as a prerequisite. Directly you can opt for this paper, and the learning objective or the main benefit of learning this paper is it has simple and easy syntax. आप इसमें ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन पे फोकस करेंगे एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स का हम यूज करेंगे यूजिंग दी एनाकोंडा एंड जुपिटर सॉफ्टवेयर. सो इट हेल्प्स यू टू एक्चुअली विजुअलाइज using different tools and packages, और हम डेटा पे वर्क करेंगे and we will visualize the tools, we will learn the plotting techniques which can help in analyzing the financial data, in analyzing different data sets in every field. So familiarity with the Jupyter or Anaconda software, and the other learning outcome is the basic knowledge of Python programming. So you will also learn the basics of machine learning, and this course will help you to analyze the data. Next slide. Okay, the syllabus comprises of ये Python programming में आप starting से you will learn from scratch how the Jupyter works, how the Anaconda and different software में Python के basic syntax क्या है, different data sets से database से कैसे connectivity है, and you will learn and visualize how the data cleaning is helpful and how the different charts and graphs are helpful in designing. Next slide. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So this is the end of all SEC papers, and now in case you have any queries, you can write that in chat box and we will start answering your doubts. हाँ, ये one by one. हाँ, आप कौन ले रहे हैं? सीमा जी आप ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? ये सर, सारे कुछ क्वेश्चंस को शायद मुझे भी ना पता हो, आप नहीं, तो ठीक यहाँ है, है, आप मैं देख लेता हूँ. एक ने निकिता ने बात की है, सर इज देयर एनी प्रोविजन दैट वी टेक सेम जी फॉर 4 सेमेस्टर्स? यस, दैट वन शुड डू लाइक दिस. अगर आपको माइनर डिग्री चाहिए तो आपको 8 जी पढ़ने होंगे, और वो 8 जी आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप करेंगे, और ये सारे जी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो नहीं ले सकते. अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हिस्ट्री के जी नहीं ले सकते, उनको अपने सारे जी किसी और कोर्स के लेने होंगे, और वो 8 मिनिमम क्रेडिट अगर आप पढ़ेंगे. हमारे UGCF का बुलेटिन उसको पढ़िए, और उसमें लिखा हुआ है माइनर डिग्री के लिए आपको कितने क्रेडिट का जी लेना होगा. और फिर है they have to study all the 6 GE papers of the same subject to get the minor degree. हाँ, तो ये तो बात हो गई है हमारी. Next question है, I want to change. Should I bring that is sports for life 1. What I have to do to change the WAC? ये अब नए WAC हम प्लॉट कर रहे हैं. आपने जो WAC पहले पढ़ चुके अब उसे दोबारा नहीं पढ़ सकते आप. तो जो नई लिस्ट WAC की आएगी, आप कोई भी WAC उसमें से चूज कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट का. ये एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड है. पर्सन हु स्टडीड साइंस इन क्लास 12th ओनली कैन ऑप्ट for मतलब the query is whether class 12th the science in class 12th is necessary to study environmental course. I don't think so. It's आप देखिए उसमें कौन ये स्वागता जो इन्वायरमेंटल वाला कोर्स है. 2 कोर्स हम इन्वायरमेंट के शुरू कर रहे हैं. वन बाय our department of environmental sciences and another is by geology department. तो आप उसमें सिलेबस में देखकर बताएं कि क्या उसके लिए 12th में साइंस होना जरूरी है
इन दोनों उस कोर्सेज को पढ़ने के लिए? सर नहीं नहीं, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, नहीं। इवन हाँ, तो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। अच्छा, ठीक है, चलो। फिर एक क्वेश्चन है, नाउ दोज हु डू नॉट इवन नो द बेसिक्स ऑफ एक्सेल शुड टेक एडवांस एक्सेल और नॉट? आई थिंक इसका आंसर तो यही है कि यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल बिफोर यू टेक ऑन एडवांस एक्सेल. What we can do is we will be having so many students in the college, सीमा जी, जिनको अभी एक्सेल यूज करना या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज नहीं होगी जी. एंड आई एम नॉट श्योर कि जो आईटी टूल्स भी शायद इन लोगों ने ना पढ़े हों, जो पिछली बार हमने एससीसी का या वैक था, ये एससीसी था जो हमने फ्लोट किया था कॉलेज में जी. तो हम क्या कुछ बच्चों के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स और वो फिर दोबारा से ये कोर्स शुरू कर सकते हैं, जो बच्चे लेना चाहें वो ले सकते हैं, एटलीस्ट एक्सेल का एक शॉर्ट. सॉरी सीमा जी, आप बताएं. नहीं, मैं यही बोल रही थी कि पिछले बार बेसिक आईटी टूल्स का एक पेपर था, वी कैन फ्लोट इट अगेन आल्सो. आई थिंक इट डिड कवर एक्सेल. तो शायद जिन्होंने पूछा है ये उन्होंने वो कोर्स नहीं पढ़ा हो, ठीक है जी. तो और अगली बार भी ये कोर्स फिर दोबारा से फ्लोट होंगे, तो आप दोबारा फिर भी एक बार कर सकते हैं इसे. और अगर ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो एक्सेल स्पेशली बेसिक पढ़ना चाहते हैं एक्सेल का, सो वी कैन आल्सो हैव ए सर्टिफिकेट कोर्स फॉर दीस स्टूडेंट्स. ठीक है. सर कुछ एक्सेल तो अभी हमारे आईटी वाले पेपर में भी दे कैन स्टडी आईटी टूल्स एंड डेटा एनालिसिस. बात हो गई, वो हम फ्लोट कर चुके हैं और आईटी टूल्स तो अब दोबारा फ्लोट नहीं कर रहे हैं हम उसे. नहीं, डॉक्टर गुप्ता, सीमा जोशी जी जिसके बारे में बात कर रही है, दैट इज द न्यू एसईसी पेपर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू फ्लोट दिस सेमेस्टर. दैट इज बेसिक आईटी स्किल्स एंड क्या नाम है सीमा? आईटी टूल्स एंड डेटा एनालिसिस. हाँ, डेटा एनालिसिस 1. डेटा एनालिसिस 1. ठीक है, तो आप बढ़िया है, आप उसको करें, आप उसको ले लें और उसमें आप जो सीख पाएंगे वो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो उसमें सर एक्सेल पे बेस्ड है वो पेपर, आईटी में एक्सेल कराया जाएगा. ठीक है, बढ़िया. Then next question इसमें लिखा है, बच्चे ने पूछा है, नवीन गौतम ने, कि क्या पीडीएफ सारे की सारे मीटिंग की तो नहीं, पर पीडीएफ जो अवेलेबल कोर्सेज हम फ्लोट कर रहे हैं उन सारे कोर्सेज का एक पूरा पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर विद इन 2 days भेज दिया जाएगा. और आप यूनिवर्सिटी की साइट पर चले जाएं, वहाँ यूजीसीएफ का सिलेबस रखा हुआ है, पर हो सकता है आपको उसे तलाश करने में दिक्कत हो, तो हम लोग इसे कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करके आपको वेबसाइट पर ये मिल जाएगा. और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम कोशिश करते हैं सैक और वैक के और जीई के पीडीएफ बनाकर जो कॉलेज फ्लोट कर रहा है उतने ही हिस्से को आपको भेज दें. बिल्कुल, we will try this. Definitely we will try to do this. Then there is a question, बसंत आप इसके बारे में बता सकते हैं कि he is asking, logical reasoning is very essential element in competitive exams, but one thing that I want to know is what will be the level of maths there? Basant, are you there? I think he's not there. Anybody else from maths department can answer? Am I audible? Yes, sir, you are. Yes. The basic, the label is class 10th, 11th. That's it. The very basic one. It is not required that you must have a mathematics in class 12th or further. I mean, if you have a basic knowledge of mathematics, I mean class 6, 7th, 8th. No, बसंत इनका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है बच्चे का. Yes, sir. If they take logical reasoning, will it help them to prepare competitive exams to some extent? Yes, sir. Because the quantitative reasoning, that is a part of any of the competitive papers.
and the verbal reasoning section will be covered by this paper. Okay. चलिए नेक्स्ट चलिए सीमा जी. यस सीमा जी, क्या हुआ सीमा जी? अच्छा, सॉरी, अब मैंने म्यूट कर लिया खुद को. द क्वेश्चन इज, कैन वी कंटिन्यू सेमेस्टर 1 जी एसईसी वैक इन सेमेस्टर 2? जो जी आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जो सैक और जो वैक आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, उसे अब आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे. यू आर नॉट अलाउड. उसका अगर कोई पेपर 2 अवेलेबल होगा तभी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो फिर नया पेपर है ना, वो तो नया पेपर है. हाँ. Exactly. Then next question is, man those who chose front end web designing in semester 1, so what course they choose in semester 2 to cover full syllabus? हाँ, तो अभी आपको बताया गया था बैक एंड डिजाइन, वेब डिजाइन का जो डेवलपमेंट का जो कोर्स है, तो आपका फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग हो गया और बैक एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया. तो इस तरीके से दोनों कोर्सेज आपके कंप्लीट, पूरा की पूरा वेब डिजाइनिंग का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया. Somebody is asking, can we choose the same SEC as in semester 1? अभी इसका आंसर मिल चुका है आपको कि नहीं, आप वही पेपर दोबारा आप नहीं कर सकते हैं. डिपार्टमेंट हिंदी ऑल्सो नॉट, ये तो समझ में नहीं आया. इसका रिकॉर्ड फॉर्म भी अवेलेबल होगा हमारे RLA कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. They want to know whether the recording of this will be available on the official YouTube channel. हाँ ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमारी वेबसाइट के जो डेवलपर हैं वो थोड़े से दिक्कत में हैं, so it might take time. Then somebody is asking, if that person has taken Python, he wants to change his SEC, he wants to take it in English. Yes, of course you can do that. हाँ, अगर they want to take English track, yes. हाँ, SCC कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, आप कोई भी SCC चूज कर सकते हैं. कोई नई स्किल और सीखना चाहें, एक स्किल आपने सीख ली है, दूसरी स्किल अगर आप सीखना चाहें तो आप आराम से दूसरी स्किल सीख सकते हैं. लेकिन जो बात जी की हो रही थी, जी में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको माइनर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में करनी है तो आपको एक नंबर ऑफ सेट जी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ऑफर कर रहा है वो लेने होंगे. Then the next question is, I have studied basic IT tools, so should I go for spreadsheet? Yes, you can go for spreadsheet. आप और भी अभी आपने सुने हैं 2-3 और कोर्सेज हैं, तो आप उनमें से भी कोई चीज आप ले सकते हैं. Sorry to interrupt you, ma'am. Actually, document preparation and presentation is an extension of basic IT tools. If student want to cover, तो वो basic IT tools के साथ जो जिन्होंने लिया है वो document preparation and presentation भी ले सकते हैं मैम. हाँ, to cover the full syllabus. Specific question spreadsheet से related था. That is why I said कि अगर वो इस तरह का कुछ करने के लिए चाहते तो advanced spreadsheet वाला भी ले सकते हैं, or they can opt for some other related course. जी मैम. बैक और सैक सब्जेक्ट्स का लिंक नहीं आया अभी. अभी हमने फॉर्म अपलोड ही नहीं किया है टू आस्क फॉर द ऑप्शंस. तो आपको ये थर्सडे या फ्राइडे को मिलेगा आपका लिंक. कल जब जी का भी हो जाएगा ओरिएंटेशन, वैक का भी ओरिएंटेशन हो जाएगा, उसके बाद ये आपको ऑप्शन फॉर्म मिलेगा. We have to study G for how many semesters to take a minor degree in it? हाँ, ये आपको UGCF में देखना पड़ेगा. I think it is 10 number of G's throughout all these 4 years to get the minor degree. नहीं सर 7 है, 28 क्रेडिट्स करने हैं. हाँ जी सर 7. 28 क्रेडिट्स करने हैं आपको पूरे, और 7 है पेपर्स. एक ही डिसिप्लिन के अगर आप लेते हैं तो माइनर डिग्री मिलेगी. I think these were this, मतलब remaining questions more or less similar ही थे, तो we have covered most of the questions. ये बार एक बच्चा जो है काफी परेशान है, उसको बुक्स नहीं लिए जाने देते हैं हम लोग लाइब्रेरी के अंदर.
तो चलिए इसका आंसर हम कर देते हैं बच्चे। बुक्स अगर हम लोग किसी भी लाइब्रेरी में बाहर की बुक्स अलाउड नहीं है, नोट्स अलाउड नहीं है। वी हैव फाउंड मैनी टाइम्स कि बच्चे जो है हमारे जो अपनी किताबें लाइब्रेरी के अंदर है उसमें से पेजेस फाड़ के ले जाते हैं। तो टू हैव आवर बुक्स सेफ वी डोंट अलाउ। चलिए आई थिंक एनी मोर क्वेश्चंस? तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन अगर हैं तो कल भी पता कर सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं सेशन में, चैट बॉक्स में। ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल यू शुड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन टुमारो सेशन फॉर वैक एंड जीई ओरिएंटेशन। ठीक है। तो वैक स्टूडेंट्स वैक ओरिएंटेशन और जी से रिलेटेड पेपर्स का ओरिएंटेशन कल 7 o'clock आप कल होगा, तो आप फिर ज्वाइन करें उसके लिए। थैंक यू। Okay, I take this opportunity to thank Professor Gupta for being with us constantly throughout the session and helping us in answering the queries also. Thank you very much, Dr. Gupta, for being present over here. I would also thank all my colleagues who basically helped in presentations and who presented, who also were present throughout the session. I would also thank all the students who participated in this session. I think it will turn out to be useful for all of them. Thank you very much, all of you. I would, in the end, I would thank Sandeep for being such a good and constant help to me. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. So we will meet tomorrow at 7 p.m. Tomorrow at 7 o'clock. Okay. Thank you. Okay. Good night. Good night.